Hello everyone, I am Mrinal Chatterjee, ex-Indian Revenue Service Officer, UPSC CSAT 2017, rank 344, and currently guiding UPSC aspirants through KSG India's platform. So prelims 2026 is extremely close, and all the aspirants must be worried about CSAT. CSAT में भी specifically जो reading comprehension वाला part है, it appears a part which is achievable, जहाँ पे आप score अच्छा कर सकते हैं, but then the options are so close, and then you need to have proper practice and proper analysis about how to attempt the questions in a correct manner. So if we see the pattern of UPSC reading comprehension, specifically about the types of questions, you'll see that either they ask you majorly about the conclusions or inferences आप जो passage से derive करते हैं, or they would ask you about the kind of assumptions that can be derived or made from the passage. So I would like to highlight three important points in this. First advice, always read the question first and then go to the passage. Question में क्या पूछा गया है, if you understand that, then while you read the passage you will have that thing in the back of your mind कि अगर मैं ये passage अभी पढ़ रहा हूँ, I need to know the conclusion or I need to think about what is the main outcome of this passage. Second, when you attempt the question and जैसे मान लेते हैं उसमें अगर inferences के बारे में बात की गई है, so only take those conclusions or inferences or observations which are derived from what is written in the passage, not from your previous knowledge, not from your peripheral thinking. But अगर passage में 5 point दिए गए हैं, तो stick yourself to those 5 points only. Do not go beyond that scope. एज एस्पिरेंट्स हमारी दिक्कत यही होती है कि अगर मान लो कोई टेम्परेचर चेंज पे कोई सवाल आ गया, कोई पैसेज आ गया, सो वी रीड द पैसेज एंड उसके अलावा हमारे पास जो दुनिया भर का ज्ञान होता है अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, हम उसको भी उस इन्फॉर्मेशन को भी उस पैसेज में सप्लीमेंट करके फिर हम आंसर टिक करते हैं, एंड देयर वी गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज लीडिंग टू अ रॉन्ग आंसर. ठीक है. एंड जब भी एजम्पशंस वाले क्वेश्चंस की बात आती है, अगेन ऑलवेज टिक टू द स्कोप ऑफ द पैसेज. हमेशा ये देखो कि क्या उस पैसेज में जो दिया हुआ है, क्या उसके बेसिस पे वो एजम्पशन वैलिड है. डू नॉट थिंक इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. ठीक है. या अपने नॉर्मल जो आपकी नॉलेज है उसमें नहीं सोचना है. ओनली स्टिक टू द स्कोप ऑफ द पैसेज. I can tell you, if you can confirm this, if you can ensure this, that you are remaining within the scope of the passage, and जो passage में जो words जो lines लिखी है अगर आप उनके साथ ही काम करते हैं, then your probability of taking the correct answers for these conclusions and assumption based questions will definitely increase. So what my plan is that I'll go through some PYQs with you. In this video, I'll be taking the 2024 comprehension related questions from prelims CSAT, and then I'll try to give you my perspective of solving these questions. तो आइए शुरू करते हैं CSAT 2024 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस. The aim of this exercise is to help you understand how to tackle reading comprehension वाले questions, because मैंने देखा है कई सारे aspirants के लिए मैथ्स और रीजनिंग बहुत टफ रहता है, तो इसीलिए हमारा रिलायंस ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाता है. Now, the good thing with reading comprehension वाले questions is that the pattern is similar, the pattern is repetitive, and अगर UPSC कुछ pattern change भी करेगा, then अगर आप इनको previous years questions को practice करके जा रहे हैं, then you'll be able to tackle the new patterns as well. So my aim here would be to take you through each and every question and tell you that as an aspirant how I used to solve these questions, and अगर मैं exam hall conditions में इन questions को कर रहा होता, then what would have been my strategy. Okay, so let's begin with this. Please see the first question which came in reading comprehension. My sincere advice to solve all these kind of questions would be that before you actually read the passage, सबसे पहले पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है. I'll tell you that why this is important. If you see question number 1, they have asked about which of the following statements best reflect the most logical and rational inferences that can be made from the passage. तो ये passage पढ़ के आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो conclusion में या inference में आपको लग रही है, वो हमको आंसर करना होगा. एंड तो जब मैं क्वेश्चन का पैसेज पढ़ूंगा तब मेरे दिमाग में ये रहेगा दैट आई हैव टू लुक फॉर द कंक्लूजन, आई हैव टू लुक फॉर द इन्फ्रेंसेस. ठीक है. एंड सेकंड क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग assumptions have been made that based on the above passage, ऊपर वाले पैसेज के बेसिस पे which of the above following assumptions have been made. So पैसेज पढ़ के मुझे assumptions को देखना है. So let's solve this. Now I'm reading the passage. According to the Food and Agriculture Organization,
one third of food produced for human consumption is lost or wasted globally. Okay, food is lost or wasted throughout the supply chain, and initial from initial agricultural production to final household consumption. Okay, the increasing wastage also results in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agricultural practices, and excessive groundwater extraction. So जहाँ जहाँ पे कोई key terms आ रही है, I'm just highlighting those. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons of CO2 production every year. Decay also leads to harmful emissions, okay, of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and wastage of food in all forms is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. तो फूड वेस्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है. लेट्स सी इनमें से कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस है. So the current methods of food distribution are solely responsible for the loss and wastage of food. सो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है दैट दीज आर सोली रिस्पॉन्सिबल. मुझे तो कहीं पे भी ऐसा कंक्लूजन नहीं लगा इससे. सो वन इज डेफिनेटली रॉन्ग. एंड इफ आई सी, ओ, वन हटाने से तो सारे ही ऑप्शन हट जाते हैं अपने. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. बट आई विल ऑल्सो टेल यू दैट अगर आप क्वेश्चन आप स्टेटमेंट नंबर 4 को भी देखें यहाँ पे, स्टेटमेंट नंबर 4 सेज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल. ऐसा भी कहीं पे भी इस पैसेज में नहीं लिखा है. While statement number 3, reduction in loss and wastage of food results in lesser carbon footprint. Okay, so आप देखेंगे कार्बन के लिए it says that the energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons of CO2 production every year. और यहाँ पे स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं that reduction in the loss, तो लॉस एंड वेस्टेज में अगर रिडक्शन होगा इट वुड रिजल्ट इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे कि फूड वेस्टेज होने से कार्बन एमिशन होता है और लेस वेस्टेज होने से फुटप्रिंट कार्बन का कम होगा. सो 3 वुड बी करेक्ट. एंड सेकंड इज लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन की बात की गई थी. सो ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट. इसको आप 1 को एलिमिनेट करके भी आप आंसर पे पहुंच सकते थे, बट मैंने आपको इस तरह से भी बता दिया कि 2 एंड 3 क्यों सही है. फिर कुछ एजम्पशंस की बात करते हैं कि इस पैसेज के बेसिस पे क्या एजम्पशंस बनाए गए हैं. The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. So पूरे food distribution mechanism की बात की गई है, उसको reimagine करना पड़ेगा. So I think जब यहाँ पे इस passage में बोला गया है food is lost or wasted throughout the supply chain from the initial agri stage to final household consumption. So yes, एक ही assumption valid लग रही है कि the entire food distribution mechanism has to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. I would say this is a correct assumption because अगर अगर ये चीज़ होती है, आपको पैसेज पढ़ के समझ आए कि ये चीज़ खराब है, तो अगर इस चीज़ को हम एज्यूम करते हैं कि ये ठीक किया जाएगा, तो the results would be positive. Second, ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. Okay, पैसेज में कहीं पे इसका इतना बड़ा जिक्र नहीं है, बट देन इफ इट इज एज्यूम्ड दैट रिडक्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स. सो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात की गई है जो सिटीजन से रिलेट करता है. एंड एड्रेसिंग द लॉस ऑफ ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ food sufficiency and food sustainability. So again, this somehow relates. Yeah, अगर आप because food की वेस्टेज से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स बताई गई है. सो इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स. और सबको ये काम करना पड़ेगा बिकॉज हाउस होल्ड कंजम्पशन की भी बात की गई है, एग्रीकल्चर की भी बात की गई है. सो एवरी वन वुड बी इन्वॉल्व. सो आई वुड से फॉर बोथ द एजम्पशंस दीज आर करेक्ट एंड आई वुड गो विद सी फॉर द आंसर. ओके, सो आइए देखते हैं अब अगला पैसेज. इसमें भी सबसे पहले आई सी दैट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. सो इट सेज व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल and rational inference or inferences that can be made from the passage. ठीक है, तो मुझे conclusion पे ध्यान देना है. And again इसमें assumptions पूछी गई हैं. ठीक है, so let us see this. So now I'm reading the passage. As inflation rises, even governments previously committed to budget discipline are spending freely to help households. Okay, higher interest rates are announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity because to maintain stable debts while paying more to borrow because to maintain stable debts while paying more to borrow, governments must cut spending or raise taxes. So the thing is it is saying that central banks have to announce higher interest rates
or to maintain stable debts while paying more to borrow. अगर सरकार को ज़्यादा डेट उठाना है और ज़्यादा पैसा पे करना है बोरो करने के लिए, तो या तो उनको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे या फिर उनको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? सो विदाउट फिस्कल बैकअप, मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। सो इट सेज कि अगर फिस्कल बैकअप नहीं है, अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, सो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई कर रही है, सेंट्रल बैंक कर रही है, इट इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन, वो काम नहीं करेगा। हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी एंड नॉट डिसइन्फ्लेशनरी बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद it becomes inflationary and not disinflationary because governments are borrowing more. Okay, so the risk of monetary unmooring is greater when public debt rises because interest rates become more important to budget deficits. Okay, so थोड़ी technical statement भी है यहाँ पे. The risk of monetary unmooring is greater when public debt rises. Public debt rises because interest rates become more important. तो budget deficits पे फोकस नहीं रहता है, इंटरेस्ट रेट्स पे फोकस चला जाता है सारा, बिकॉज गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर रही है. सो कि लेट्स सी विच आर दी लॉजिकल मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, क्या रिफ्लेक्ट करता है. सो सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग. ओके, सो दिस स्टेटमेंट कहीं पे जहाँ था, specifically this statement is being talked about, I think. Without the fiscal backup, monetary policy eventually loses traction. तो monetary policy जो चाह रही है, और इवन द नेक्स्ट स्टेटमेंट की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद डिसइन्फ्लेशनरी ये नहीं होता है. सो येस, दिस अपीयर्स टू बी अ करेक्ट कंक्लूजन दैट सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग. बजटरी बैकिंग चाहिए होगा तभी सेंट्रल बैंक कर पाएगा. एंड द effects of monetary policy again, मतलब जो सेंट्रल बैंक जो कर रही है, डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट. सो डेफिनेटली ये पूरी जो कहानी ही है वो यही बता रही है. सो सेकंड इज आल्सो करेक्ट एंड आई वुड गो विद सी एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Fourth, based on the above passage, the following assumptions have been made. Fiscal policies of government are solely responsible for higher prices. Definitely not, because जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अपना सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का तालमेल होना चाहिए, तभी जाके प्राइसेस कंट्रोल होते हैं. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट गिवन इन दी पैसेज, और उससे कोई एजम्पशन भी नहीं डिराइव कर पाएंगे हम. Higher prices do not affect the long-term government bonds. Higher prices do not affect the long-term government bonds. तो अगर prices high है, so कहीं ना कहीं जो passage में बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक विल स्टेप इन, बट कहीं पे भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात नहीं की जा रही है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात. आई कैन नॉट सी इट एनीवेयर. लेट मी जस्ट कंफर्म. गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर एंड ऑल, बट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो वो होते हैं जब गवर्नमेंट पैसा उठा रही है मार्केट से एंड गवर्नमेंट इशूज है बॉन्ड्स, और हाई प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट. वैसे तो दिस एजम्पशन इज इटसेल्फ रॉन्ग, बिकॉज अगर हाई प्राइसेस रहेंगे सो कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी. सो सेकेंड इज डेफिनेटली रॉन्ग. सो आई वुड से none of the assumptions given here are correct, and I would mark D as the correct answer for this. Okay, see this question now. What is the demand of the question? Which of the following statements best reflect most logical inference? Okay, and second is about assumptions. Perfect. Let's read the passage. Today, if we consider cities like New York, London, and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach were imposed on their precincts. Okay, the backbone of the systems theory is the process of translating social, spatial, and cultural desirables into mathematical models using computing, statistics, optimization, and algorithmic way of formulating and solving problems. Very heavy use of English and jargons. So कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं that the backbone of system theory, कोई theory की बात कर रहे हैं wherein the process of translating जो भी कल्चरल डिज़ायर्स हैं एंड ऑल, उनको एक मैथमेटिकल मॉडल और कंप्यूटिंग से अचीव करने की बात हो रही है, जो आजकल आज की डेट में एआई कर रहा है. द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ वेस्ट which began to train professionals in planning spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains. Okay, वेस्ट ने शुरू से ही एक्सपर्ट्स को यूज किया है इसमें. This was because these very subjects were absorbed in the planning
curriculum that had its roots in the social sciences, geography and architecture. तो कहीं ना कहीं वहाँ पे करिकुलम ऐसा था कि वहाँ के लोग इस चीज़ को समझ सके, पढ़ सके. एंड प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट. ठीक है. Okay, so let's see inference. Curriculum for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approach. This looks okay. In India, city administration is under bureaucracy which lacks formal training. Bureaucracy की कहीं बात नहीं है. In India, the management of urban areas is of local affair. India की local affairs की कहीं बात नहीं है, तो C भी नहीं हो सकता. With high density of population and widespread poverty in our urban areas, planned development, ये सब चीज़ें कहीं पैसेज में नहीं पूछी गई है. These may be true in standalone sense, but passage से नहीं आई है. Therefore, we are fit to eliminate these, and A would be the correct answer for this. Assumptions. India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practice. So कहीं ना कहीं ये ठीक सेंटेंस है, बिकॉज हम लोग कह रहे हैं कि अगर आज के डेट में इंडिया के पास न्यू जनरेशन अर्बन प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी नॉलेज जो है वो इज रेलेवेंट टू द अर्बन प्रैक्टिस, तो कहीं ना कहीं हम इस वेस्ट के करिकुलम वाले मॉडल को प्रमोट कर रहे हैं जो इंडिया ने उस टाइम पे मिस आउट करा. बट आज की डेट में अगर हम हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, सो दे कैन बी वेरी गुड एसेट्स फॉर creating good urban planning. So I would say one is correct. ये एक सही assumption लग रहा है based on the passage. Indian universities at present have no capacity or potential to impart training in systems approach. ये कहीं पे भी स्टेटमेंट पैसेज से डिराइव नहीं हो रही है, बिकॉज पैसेज में सिर्फ इतना बोला गया है दैट प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर. तो डिफर कर रही है वेस्ट से, बट नो कैपेसिटी और नो पोटेंशियल की बात नहीं है. सो आई वोंट से सेकंड इज अ करेक्ट assumption एंड ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, अब ये वाला सवाल देखते हैं. अगेन, व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन? Assumptions and central idea conveyed by the passage. Okay, let's read the passage. By the time children reach class 8, the bulk of them tend to be in the age of 13 se 15 saal. But in our country, about a quarter, one fourth of the children in class 8 struggle with reading simple texts, and more than half are still unable to do basic arithmetic operations like divisions. Okay, every year, about 25 million young boys and girls from elementary school move into the life that lies for them beyond compulsory schooling. Ninth class में जा रहे हैं. They cannot enter the workforce, at least in organized sector, 18 की age तक. For many families, these children are the first from their families ever to get this far in school. Okay, parents and children expect that such graduates, अच्छा इनको graduates बोला जा रहा है, from school will go to high school or college. ठीक है. Hardly anyone wants to go back to agriculture. On the other hand, abilities in terms of academic competencies, okay, are far lower than they should be, even based on the curricular expectations of class 8. तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसीज के ऊपर बात की गई है कि 8वीं क्लास में होने के बावजूद एक 8वीं क्लास के बच्चे को जो आना चाहिए वो नहीं हम लोग अचीव कर पाते अभी भी. I'll do the second question first because इसमें conclusion की बात की गई है. So total eradication of poverty in the country will resolve the issue of underperformance. तो poverty की कहीं बात नहीं है, so it is not coming from the passage. I'll remove this. Monetary incentives to parents and teachers is a strategy to improve the children's academic. Monetary incentives भी कहीं नहीं बोला गया है, so I'll remove this. Public policy should ensure that the competencies and achievements of young people are aligned with their expectations. ये सही हो सकता है. India is not going to take advantage of the demographic dividend unless some school pass outs go back to agriculture. ये तो बिल्कुल ही गलत है. So C is the correct answer for this, because यहाँ पे public policy जो है it should be aligned with the competencies and the expectations. ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है कि हम लोग समझते हैं कि ये स्कूल से निकल के ये ग्रेजुएट्स कॉलेज में जाएंगे, तो अगर कॉम्पिटेंसीज अलाइंड होंगी तभी ये जा पाएंगे. नाउ लेट्स कम टू द एजम्पशंस वाला पार्ट. For effective school education, parents have greater role than governments. Parents have greater role than governments. Parents का जिक्र मुझे यहाँ पे दिखा है यहाँ पे. Parents and children expect that graduates from school will go to high school and college. और पेरेंट्स का जिक्र अगर कहीं पे हो, फैमिली में होगा, these children are the first born. बट पेरेंट और गवर्नमेंट के रोल का कंपैरिजन यहाँ पे कहीं नहीं है. कहीं पे भी पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं बोला जा रहा है, पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस के बारे में बोला जा रहा है. सो फर्स्ट इज नॉट एन अजम्पशन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस passage hopefully. And second thing, school curriculum that conforms
to today's requirements and is uniform for the entire country may address the issues brought out. स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टू टुडेज रियलिटी. स्कूल करिकुलम तो ठीक है बट लोगों ने उसको अचीव नहीं करा है. कॉम्पिटेंसी पे बात है पैसेज में बट करिकुलम पे नहीं. और यूनिफॉर्म फॉर एंटायर कंट्री का तो कहीं जिक्र ही नहीं है. आई डोंट थिंक सो इन आर कंट्री क्वार्टर एंड ऑल. सो सेकेंड इज ऑल्सो नॉट कमिंग फ्रॉम द पैसेज. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज जो पैसेज से नहीं आ रहे हैं हम उसको नहीं लेंगे. सो हेयर आई वुड गो विद डी एंड इन 22 आई वुड गो विद सी. Now let's see this passage. What is the question? Which one of the following statements best reflects the thinking of the author? Author की thinking के बारे में पूछा है. About the science. Okay, let's read the comprehension. We take it for granted now that science has a social responsibility. The idea would not have occurred to Newton or Galileo. They thought of science as an account of the world as it is. And the only responsibility that they acknowledged was to tell the truth. Okay. The idea that science is a social enterprise is modern and it begins at the Industrial Revolution. We are surprised that we cannot trace a social sense further back because we nurse the illusion that the Industrial Revolution ended a golden age. Okay, so we are surprised that we cannot trace a social sense further back because we nurse the illusion that the Industrial Revolution ended a golden age. Which of the following statements best reflects the thinking of the author about the science? Science must value the commitment of the scientists. ये कहीं पे इसका कोई मतलब नहीं है. Science is a product of civilized society and must be used for the promotion of scientific awareness in people. ये passage से निकल के नहीं आ रहा है. Industrial revolution was made possible by the advancements in science. Science must pursue truth but be responsible for social welfare. I think D is the correct answer for this because बाकी जो तीन statements है these are not flowing from the passage, so I would go with D. Now let's see this passage. The demand of the question says which of the following is emphatically conveyed by the author. मतलब author क्या convey कर रहा है एकदम with full force. Okay, and then based on the above passage, the following assumptions. Again the same format. The history of science is the real history of mankind. Okay, history of science. In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing, by contrast, an aspect of truth which may be easily overlooked. Okay. In this case, it is easy to overlook the relations between science and mankind and to treat the former as some abstract third party which can sometimes be praised for its beneficial influences but frequently and conveniently blamed for the horrors of war. Science and mankind cannot be divorced from time to time at men's convenience. Yet we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, the opening years of present period of civilization have been dominated by international conflict. Is this the inevitable result of the progress of science or does the fault lies elsewhere? So कहीं ना कहीं साइंस के बारे में बोला गया है और ये बोला जा रहा है कि साइंस को जो है वो मैनकाइंड से अलाइंड होना चाहिए, लड़ाई के लिए फोकस या लड़ाई के लिए यूटिलाइज नहीं करना चाहिए साइंस को. सो लेट्स सी which of the following are emphatically conveyed by the author. Without science, mankind could not have continued to exist till today. Without science, mankind could not have continued to exist till today. Let's see, ऐसा कहीं पे कुछ बोला गया है कि नहीं. So if we read this, in this case, it is easy to overlook the relations between science and mankind and to treat the former as some abstract, which can sometimes be praised. Mm-hmm. The history of science is the real history of mankind. So ये काफी important statement है शुरू में ही. History of science is the real history of mankind in the striking epigram. Mm-mm. Okay, so let's see if this is being emphatically conveyed that without science, mankind could not have continued to exist till today. I do not think this is 100% correct. Second statement, it is the science that will ultimately determine the destiny of mankind. Okay, let us see if there are some overlinks like this. Science and mankind cannot be divorced from time to time at men's convenience, yet we have seen in spite countless opportunities dominated by conflict. So it is science that will ultimately determine the destiny of mankind, and without science, mankind
could not have continued to exist till today. So कहीं ना कहीं ये साइंस को तो वॉर से रिलेट कर रहा है. So is it the science that will ultimately determine the destiny of mankind? I would say both the statements are not emphatically conveyed by the author because it is talking about the interrelationship between science and mankind, but not this. I would go with D. I would go with D in this, right? And 32, assumption. The horrors of modern life are inevitable result of the progress of science. So ये क्वेश्चन है जो ये यहाँ पे पूछ रहा है, but it is not an assumption. The aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has made it. Okay. The aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has made it. So कहीं ना कहीं truth की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे. Let us see where do we trace truth here. In this case, it is relation between science and mankind. Science and mankind cannot be divorced. Okay. So the aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has made it. So the history of science is the real history of mankind. So कहीं ना कहीं ये statement मुझे ठीक लग रही है because it is getting derived directly from here that but overlooking की बात कहीं पे नहीं है. So its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. Like most epigrams, its power lies links it links science with its background. I think second is right, so I would go with B in this case. Let's see this question. What is the demand of the question? So there's a statement which is given, and we'll have to see the correct answer. Okay. And in second part, we are talked about the assumptions. Okay, let's read the passage. Only with long experience and opening up of his wares on many a beach where his language is not spoken will a merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. Okay, तो merchant travel करेगा तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Such delicate goods, okay, delicate goods as justice, love, honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere. ठीक है, ये यूनिवर्सल वैल्यूज है बट दे आर वेरियसली मोल्डेड एंड डिफरेंटली हैंडल्ड. ठीक है, सबका अपना तरीका है हैंडल करने का एंड समटाइम्स नियरली अनरिकग्नाइजेबल. ओके, माई डेफिनेशन ऑफ लव might be different from yours and it might be unrecognizable if you meet them in foreign land. Okay, and the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows. ठीक है, so art of learning fundamental common values is perhaps okay. So 33 question. When we meet other people while on travel, we learn to differentiate between imagination and understanding. Okay, communities and nationalities. B तो हो ही नहीं सकता, कहीं पे nationalities की बात नहीं की गई है. Local values and universal values C लग रहा है. फ्रेंड्स एंड फोर्स की बात नहीं है, दुश्मन की बात नहीं की गई है कहीं पे भी. बट ए इज इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सेकंड इज लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल. सो सी यहाँ पे पैरोकियल एंड यूनिवर्सल चॉइसेस है. सो देयरफॉर आई वुड गो विद सी एज द बेटर आंसर. एंड टेकिंग assumptions, travel leads to an understanding of humans. डेफिनेटली ये बता रहा है जैसे आप ट्रैवल करेंगे आप दूसरे के बारे में समझेंगे. ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज. Yes, so the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel. So two on one दोनों ही ठीक है. A person with long experience in travel can resolve differences among people. Can resolve differences amongst people. Um, ये पैसेज से फ्लो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से बिकॉज रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस की कहीं पे बात ही नहीं की गई है. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड ऑल एंड आप कैसे दूसरों के बीच में ठीक से रह सकते हो बट whether it is resolving differences amongst people is bit dicey. And since ये passage से निकल के नहीं आ रहा है directly this assumption, therefore I would not go with it and I would say 1 and 2 A to be the only correct answer. So with this we come to the end of this video wherein we have completed half of the
questions of reading comprehension which came in 2024. I'll be coming up with the second part. Hope this was helpful for you and you understood the concepts that are required to solve reading comprehension related questions. All the best.